imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS, and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely Computer Science, Software Engineering, Artificial Intelligence and Mathematical Sciences, Business Administration, Accounting, Banking and Finance, Media and Communication Studies, Social and Development Studies, English Linguistics and Literature, Environmental Sciences and Education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smart boards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama II Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to enter into a paperless era. Therefore, campus management system has been introduced to digitalize all the departments including examination and admissions. The students have been given their individual accounts who can access their academic records. To keep the faculty and students aware and connected with the world, entire campus is covered by Wi-Fi. To polish the skills of the students and to provide them industry-based experience, SMI University has modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by, 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv. FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. Sindh Madressatul University के कैंपस रेडियो FM 96.6 मैं हूँ आपकी मेजबान दीबा इरशाद. It is aired at the frequency 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates. Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen.
To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society, and Environment Society. These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMI University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and fetched out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Maleed near DHA City. In this wake, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services. Those selfless persons who transformed the society into better one and educated the nation are remained alive forever. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi was one of them, who is considered a great visionary and social reformer of Sindh. Life story of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi is full with his tireless struggle and great achievements. The period in which he arose to the stage of advocacy for rights of Muslims was not favorable to Muslims of the land. British had annexed Sindh in 1843. Other communities took advantage of this change and dominated in all spheres of life. These conditions compelled Hassan Ali to take active part to bring the Muslims in the mainstream of the state affair. Subsequently, in the British Raj, he not only reached to a position of successful advocate, politician and great supporter of Muslim cause of the region, but he laid the foundation of modern education in Sindh by establishing Sindh Madressatul Islam in Karachi city on 1st September 1885. Born on 14th August 1830 in an educated family of Akhund Memon of Hyderabad, Sindh, Hassan Ali Afandi became orphan in his childhood when his father Muhammad Ehsan was passed away. Thereafter, Hassan Ali Afandi's elder brother Mia Umaid Ali fulfilled his responsibility by grooming his brother. He was provided basic education of Arabic and Persian at a local level. Hassan Ali Afandi started his practical life by getting a job of clerk in the office of Deputy Collector of Nowshera Feroz Division. That job laid a foundation stone of his successful career. In Deputy Collector's office, he learned English language from his colleague, as he was understanding that in the British rule, no one could achieve any position in the country without knowing English language. Thereafter, Hassan Ali Afandi assumed another job of a munshi at the Indus Flotilla at Chirak, near Thatta. His duty was to keep the record of wooden material being loaded in boats from the Chirak port of the Indus River. Over here, Chief Judge of Karachi District Court Mr. Middleton met with this talented young Muslim. After a brief conversation with Mr. Middleton offered him a job of translator and spokesperson in the District Court, Karachi. He accepted the offer and joined the third job of his life in District Court, Karachi. District Court was not his last destiny, so he studied law books and got ample knowledge of the law.
After observing Hassan Ali Afendi's knowledge of law, Mr. Middleton gave him a certificate of law practice without getting his formal examination. With this achievement, he became the first Muslim lawyer of Sindh. Then he started law practice in Hyderabad and Karachi. In the age of 50 years, Hassan Ali Afendi founded an organization named Anjuman-e-Islam in 1880 for the support of Muslims. Also, he joined another organization named Sindh Sabha. In 1881, Hassan Ali Afendi became a councillor of Karachi municipality and remained on same position till 1887. Again, he contested for the councillorship, but his opponent Naginder Gupta was succeeded. Despite that, he was nominated as a member of the municipality. In the same year of 1981, he was elected as a member of the Bombay Legislative Council on the seat of landlords of Sindh. In 1884, he left the Sindh Sabha on the account of his differences with Dayaram Giddumal, who was leading the Sindh Sabha. Hassan Ali Afendi had enrolled his sons Ahmad Ali and Akbar Ali at the Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh, which was established in 1875. In this connection, when Hassan Ali Afendi visited Aligarh College, he met with its founder Sir Syed Ahmad Khan and discussed him on the idea of establishment of a modern school for Muslims of Sindh. Sir Syed Ahmad supported his idea and suggested him that after school, he must establish a college and then university. To accomplish the noble cause of establishment of Sindh Madressatul Islam, Hassan Ali Afendi held meetings with his friends, and after agreeing upon the idea, he formed the Sindh Mohammedan National Association and the Sindh Madrasa Board. He was nominated president of both the bodies. Now Hassan Ali Afendi started to visit nooks and corners of Sindh and other parts of the British India to collect donations for establishment of the school. At the same time, he faced bitter opposition from some bigotries as they were not in favor of establishment of a modern school with English medium. But some other religious scholars of Sindh, like Maulvi Allah Bakhsh Abujo, fully supported him. Ultimately, Khan Bahadur Hassan Ali Afendi achieved his goal and founded a most modern school, Sindh Madressatul Islam, on 1st September 1885. Firstly, the school was opened in a double-story building located on the Bandar Road, now M.A. Jinnah Road, just opposite the Bolton Market. It was hired on rent. It was a great day, especially for the Muslims of Sindh, when Sindh Madressatul Islam was opened. Inauguration ceremony was held at the venue of the school. Hassan Ali Afendi presided over the ceremony, which was attended by almost 40 persons. On that occasion, Hassan Ali Afendi, in his speech, informed the audience about the aims and objectives of the Sindh National Mohammedan Association. He also appealed the people for support of Sindh Madressatul Islam. Now, another phase of his struggle started. He took efforts to get a separate piece of land for Sindh Madressatul Islam. He successfully crossed this milestone too and got more than 8 acres of land from Karachi municipality. Before it, this place was used as a kafla serai for traders who were used to come to this port city of Karachi for their business activities and were living here. After advent of railway service, this plot remained abandoned. These were the days when Hassan Ali Afendi had emerged as most popular personality of Sindh. He had also a great advantage of being a councillor of Karachi municipality. When he applied for the plot at Karachi municipality, 2 British officials, include President of the Karachi municipality, Mr. James Grant, and engineer Mr. James Strachan, extended their full support to Hassan Ali Afendi. On 4th November 1887, Hassan Ali Afendi invited the then Viceroy of India, Lord Dufferin, for a stone-laying ceremony of the Sindh Madrasatul Islam's building. Again, Hassan Ali Afendi took hectic efforts to collect funds for construction of Sindh Madrasa's building. He approached the well-wishers of Sindh's Muslims. The main building was completed in the period of 3 years with the cost of 1,97,188 rupees.
Then the Sindh Madressatul Islam was shifted to the newly constructed building on 14th November 1890. It was also a great day for Khan Bahadur Hassan Ali Afandi in his life. The British government, while recognizing his services for promotion of modern education in Sindh, gave him title of Khan Bahadur in 1888. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi also received the titles of Afandi and Bey Majidi from the Sultan of Ottoman Empire, Sultan Abdul Hamid II, for his support to the Ottoman Empire in Russo-Turkish War. During the war, Mr. Afandi had collected donations from British India and had sent these to Turkish government. Sultan of Turkey had also nominated Khan Bahadur Hassan Ali Afandi as the Turkish Consul General in Karachi in 1889 with the approval of the Queen Victoria. Hassan Ali Afandi added 2 more buildings to SMI. One of them was of the Sunni Mosque and the second was Shia Mosque. These were built in 1893 and 1894. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah had also remained a student of Sindh Madressatul Islam in the presence of Hassan Ali Afandi from 1887 to January 1892. That is why we can say that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah would have seen and listened to Khan Bahadur Hassan Ali Afandi on many times. When Khan Bahadur Hassan Ali Afandi materialized his dream into reality, and when his child Sindh Madressatul Islam became 10 years old, then its father Hassan Ali Afandi left this world on 20th August 1895 and was laid to rest in Hyderabad in the Hassan Ali Afandi Garden. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi now enjoys an immortal life, and the nation always presents him a great tribute in multiple ways. His planted sample of Sindh Madressatul Islam now has become university today, which gives more recognition to the services of this great man, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Sindh Madressatul Islam University has established a corner of Hassan Ali Afandi in its Jinnah Museum, where some important relics of Hassan Ali Afandi are displayed. बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, ये आपका पहला फरीज़ा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौरे हाजिर की सियासत का मुताला करें, ये देखें कि आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और ज़िंदगी का मसला है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया ट्रेनिंग सेंटर के ज़ेर एहतमाम फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद तलबा को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स से रोशनास कराना था। ट्रेनर उमर काजी ने तलबा को हाई स्पीड फ़ोटोग्राफ़ी, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी और लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के बुनियादी उसूल बताए और तलबा से प्रैक्टिकल काम करवाया। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए।
Sindh Madressatul Islam University, in collaboration with the Dice Foundation USA, organized a 2-day Creative Arts and Media Summit and exhibition at the Expo Center, Karachi. Number of guest speakers from media, film, drama, and academia took part in different panel discussions. A panel discussion was held with the title State of Creative Arts in Pakistan. The President Arts Council, Karachi, Mohammad Ahmed Shah, CEO TV1 Seema Tahir, producer and actor Samina Ahmed, director Babar Sheikh, actor Paris Masroor and SM Raza discussed the state of creative arts in Pakistan. They said that there was a space for new generation if they want to see their career in the creative arts. The speakers said that the importance of creative arts was being recognized in the country. It is very necessary to have an art education, to be involved in music, to be involved in drama, to be involved in painting and drawing. सिर्फ साइंस पढ़ने से बहुत अच्छी बात है, साइंस में भी इनोवेशंस करनी है, मगर सिर्फ साइंस पढ़ने से एक महज़ब तहज़ीब याफ्ता सोसाइटी नहीं बनती. एक अगर हमने तहज़ीब याफ्ता सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को आर्ट्स में इंट्रोड्यूस करें. वो अपने स्कूलों में, हर स्कूल में ड्रामा पढ़ा जाए, कहानी पढ़ी जाए, लिटरेचर पढ़ा जाए. इसी आर्ट की शक्ल जो हमारे पंजाब में या हमारे सिंध में या हमारे बलूचिस्तान में जो फोक है, वो एक बड़ी आर्ट फॉर्म है जो चंद शहरों तक महदूद नहीं है. आप मेले ठेले पंजाब के जाके देखें, उनके अपने म्यूजिशियंस देखें, इसी तरह से आप बलूचिस्तान में देखें तो फोक म्यूज़िक बहुत बड़ा एक ख़जाना है हमारे पास, सबसे मजबूत तरीन, जिसको हम पूरी दुनिया से प्रेजेंट कर सकते हैं. और हम लोग पाकिस्तान में कई अदारे हैं, हम भी कर रहे हैं कि हम अपना फोक और जो मॉडर्न वेस्टर्न म्यूजिशियंस और हमारे प्योर ईस्टर्न म्यूजिशियन, इनको मिला के भी मुख्तलिफ तरह के फ्यूजन बन रहे हैं. I think we are fortunate to be living in an age which is known as the age of innovation. The age, जैसे हमारे वक्त गुजरा है, पिछला स्टेज हम कहते हैं was the age of science. Today it is of creative innovation. So we are living in a very exciting time. Actually, this is the golden age of creativity. How much can we cash in on that? आपको इस टाइम पे खुद, जब तक आप चाहे स्टूडेंट हों, चाहे आप आर्टिस्ट हों, इस्टेब्लिश्ड हों, नहीं हों, बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक अप इनिशिएटिव्स. और इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई एक्सक्यूज़ किसी के पास है नहीं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे की नोट स्पीकर साहब ने भी इस बात की निशानदेही की थी कि एवरीबडी हैज़ टेक्नोलॉजी राइट इन देयर पॉकेट्स. सो आई फील everyone should contribute in some way or the other. जैसे एक इंजीनियर बगैर इंजीनियरिंग पढ़े इंजीनियर नहीं हो सकता, जैसे एक डॉक्टर बगैर मेडिकल पढ़े वो डॉक्टर नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से एक एक्टर भी बगैर परफॉर्मिंग आर्ट्स को पढ़े या आर्ट्स को पढ़े वो एक्टर नहीं बन सकता. ओवरऑल क्योंकि स्टेट ऑफ आर्ट अभी एक डेवलपमेंट स्टेज पे है, ठीक है, प्रोग्रेस चीज़ों में हो रही है. जिस तरह आप देख रही हैं कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स बननी शुरू हुई हैं, लोगों के अभी जो नए कॉन्सेप्ट हैं उस पर काम कर रहे हैं, सही है. तो म्यूरल और फाइन आर्ट जो है वो भी इसी तरह स्ट्रगलिंग स्टेज से है. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कर रहे हैं जो कर सकते हैं, जिनकी जितनी अप्रोच है वो अपने तौर पे जितना कर सकते हैं कर रहे हैं. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम तलबा के लिए फ़ोटो जर्नलिज्म, डिजिटल मीडिया एंड जेंडर पर्सपेक्टिव के उन्वान से वर्कशॉप मुनक़िद की गई. 3 रोज़ा वर्कशॉप का मकसद तलबा में डिजिटल मीडिया के तनाजुर में फ़ोटो जर्नलिज्म के हवाले से आगाही फराहम करना था. ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन GNMI के ताउन से ये वर्कशॉप सिंध मदरसतुल इस्लाम के सेनेट हॉल में मुनाकिद की गई, जिससे हाइब्रिड तर्ज तालीम के तहत हॉल में मौजूद तलबा के अलावा ऑनलाइन भी तालिब इल्मों ने इस्तिफादा किया.
Yeah, today I feel very happy. I'm very privileged to be here today to see the Smiu University. I have seen the traces of the founder of the nation, Muhammad Ali Jinnah, and then as well as the founder of this university, Hassan Ali Effendi. It's really given me immense pleasure to witness, to see the place on the spot, personally with my own eyes. It's marvelous to be here. We call it brotherly relations because we are brothers, and then our relation is very deep and stems from for centuries. It's not, this year we are now celebrating the 75th of our diplomatic relations, but our relations did not start 1947. It starts for centuries ago. So we have very deep-rooted brotherly relations, and it is very unique, and it has no description. It is something from heart to heart. So we are one body and two hearts, but one soul. Youth and students, they are very privileged to be in such a excellent and well-established historical university. I have seen with my eyes. So they should get the benefit to be a student here. They must be very lucky, and they are the future of Pakistan, and education is very important. So they should work very hard. They should work for this country, and then they should study hard. So the Pakistan's future is there in their hands. So they should be very aware of this, and then get benefit of being students this marvelous institution. बच्चों, आपकी खुशी और हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हर बड़ा काबिल एतमाद नहीं होता। इसीलिए आज हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। गुड टच में शामिल है डॉक्टर का आपको सेहतमंद रखने के लिए चुना, वालिदैन का आपको साफ रखने के लिए चुना, दोस्तों के साथ हाथ मिलाना, टीचर का आपके सर पर या पीठ पर थपकी देना, दादा दादी या नाना नानी के साथ गले मिलना। बैड टच में शामिल है किसी का आपकी शर्मगाह को छूना, छुपकर हाथ लगाना, अजनबियों का छूना, ऐसा छूना जिसका आपको बताया जाए कि अच्छा है लेकिन आपको बुरा और शर्मनाक महसूस हो, ऐसा छूना जो आपको गलत लगे। अगर आपको लगता है कि आपको बैड टच का निशाना बनाया गया है तो फौरन अपने वालिदैन या फिर किसी काबिल एतमाद बड़े को बताएं। मजीद मालूमात और शिकायत के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन 1099 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ लैंडलाइन, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 147वें यौम पैदाइश पर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड काउंसलिंग की जानिब से जिन्नाह अ टाइमलेस लेगेसी के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सिंध के निगरां वज़ीर इत्तलात सैयद मोहम्मद अहमद शाह ने नौजवान तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कायद की शख्सियत से रहनुमाई लेनी चाहिए और अपने जहन को नई सोच और नए नज़रियात के लिए खुला रखना चाहिए। हमने सब कुछ किया, लेकिन जो कायद चाहते थे वो बस नहीं किया। उसके अलावा कायद के नाम पर ही हमने सब कुछ किया। तो कायद का सबसे कमाल क्या था? ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट। वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद अली जिन्नाह की कायदाना सलाहियतों, सियासी जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के सबब उनका शुमार दुनिया के अजीम तरीन रहनुमाओं में होता है। And look at the era in which he was developing himself as a politician. कोई हथियार नहीं था उनके पास, कोई ट्रेनिंग थी, कुछ नहीं था एक्सेप्ट अपना रैशनल, अपना काज, अपनी रीजनिंग एंड विजडम। That brought him to be a कायद-ए-आज़म। तलबा से गुफ्तगू में गेस्ट ऑफ ऑनर मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद ने क़याम पाकिस्तान की मंजिल के हुसूल के लिए कायद-ए-आज़म की कोशिशों और उनकी सियासी बसीरत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट सोसाइटीज़ की जानिब से कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी पर तकारीर और क्विज़ मुकाबले का भी इनेकाद किया गया।
SMIU म्यूज़िक सोसाइटी की जानिब से कायद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तलबा ने नगमे पेश किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें यौम पैदाइश पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमान खुसूसी सूबाई निगरां वज़ीर इत्तलात सैयद मोहम्मद अहमद शाह, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद, सीनियर फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के हमरा केक काटा। तकरीब के अख्तिताम पर वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने मेहमानों को सुवीनियर पेश किए। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. हर चार तरफ हक़ की मुखालिफ है हवाएं, मज़दूद हैं बहबूदिए इस्लाम की राहें। हक़ गवाही पे हक़दारों को मिलती हैं सज़ाएं, तकदीर बदलती नहीं घर बैठे दुआएं। Respected Deans, Principal Officers, Faculty Staff Members and dear students, Assalamu alaikum and a very pleasant morning to you all. I, on behalf of Directorate of Student Affairs and Counseling, welcome you all in the second day of our 3-day celebrations of the 144th birth anniversary of our great leader and distinctive alumnus of Sindh Madressatul Islam, Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah. So, ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा सबसे पहला प्रोग्राम एक थिएटर परफॉर्मेंस है जो कि हमारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स ने ऑर्गेनाइज़ की है. So, over to the Art Society. Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान. Honorable Deans, respected faculty and my dear friends, Assalamu alaikum. I, Uruz Hanif, on behalf of SMIU Art Society, welcome you all on this beautiful eve of our beloved Qaid's grand birthday celebration. You all must be very excited. Today is the second day of these grand celebration and the first event of today has just begun. So let's initiate by dedicating some lines to the endless efforts of Qaid-e-Azam which made the existence of Pakistan possible. तेरे बगैर पाकिस्तान का वजूद था कहाँ, तेरी अनथक कोशिशों से बना पाकिस्तान, कि हैरत से देखता रहा तुझे जहाँ, ए मेरे जिना, ए मेरे जिना. पेश करती है सलाम तुझे सरज़मीं पाकिस्तान, ए मेरे जिना, ए मेरे जिना. On this noteworthy occasion, I would like to share some beautiful words of Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah, which he said on the inauguration of Sindh Madrasa College. The words reflects his immense love for Sindh Madressatul Islam, as he said that he knew every inch of the splendid ground of this institution where he had played and studied. So people, don't you think that we all are the lucky ones to be a part of this institution? Obviously, we all are the fortunate ones. At this happy moment, I would like to dedicate some beautiful lines to Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah. वो सहरा में गुमानों के यकीन का एक समंदर था, बड़ा बेखौफ रहबर था, हमारी ख्वाहिशों का पासबां था वो, ज़मी पर आसमां था वो हर तारीख रस्ते पर सितारा बन के चमका था, सितम के मौसमों में वो उजाला बन के चमका था. हमें जिसकी क़यादत ने महकती सरज़मी बख्शी, ज़माने में क्या है और मोतबर हमको, सिखाया जिसने आज़ादी से जीने का हुनर हमको, सिखाया जिसने आज़ादी से जीने का हुनर हमको. Keeping the pace of these happy celebrations continue, and to make it more memorable, Art Society, in collaboration with the talented students of SMIU, has organized a theatre play, Hum Jinnah Ke Sipahi, to pay special tribute to Qaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah. So now, without any further delay, let's begin with the play. So let's have a big round of applause
for the team of जिना के सिपाही. मेहरबान कदरदान साहिबान, सिंध सरहद पंजाब गिलगित बल्तिस्तान हजारा कश्मीर और बलोचिस्तान यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद. हाँ तो बहनों और भाइयों, टोपियों और टाइयों, मैं हूँ उस्ताद लेकिन उस्तादनी नहीं करता, गली कोचों में तमाशा करता हूँ. हो गए ना हैरान, कुछ कुछ परेशान, तसव्वुर तुम्हारा रह जाएगा अधूरा जब आएगा मेरा बच्चा जमुरा. आ गया उस्ताद, आ गया. अबे क्या मिनी बस के नीचे आ गया? अरे नहीं उस्ताद, आ गया और सबके दिलों पे छा गया. दिलों पे छा गया? बच्चा तू जमुरा है क्या, कोई फिल्म स्टार? अरे उस्ताद, तेरा जमूरा चाइना का नहीं पाकिस्तानी जमूरा है, समझा? शाबाश बच्चा शाबाश. हाँ तो ख़वातीनों हज़रात, दिन हो या रात, जुम्मा हो या जमेरात, शादी हो या बारात, मैं और मेरा जमुरा आपके लिए लाए हैं ना न फिल्म बल्कि वो हकीकत जिससे आप हैं लाइल्म. हाँ तो जमुरा. उस्ताद मैं कौन हूँ? आमिल. शाबाश. तू कौन? मामूल. शाबाश. जो पूछूंगा वो बतलाएगा. उस्ताद किसी खातून की सही उम्र के अलावा जमूरा सब बतलाएगा. शाबाश बच्चा शाबाश. कोई बात नहीं उस्ताद. हाँ तो जमुरा जहाँ ले जाऊं वहाँ जाएगा. उस्ताद गर्ल्स कॉलेज या किसी स्कूल कॉलेज के अलावा जमुरा हर जगह जाएगा. शाबाश बच्चा. तो फिर घूम जा. अरे घूम गया. तो फिर झूम जा. अरे झूम गया. इस सरजमी को चूम जा. बता बच्चा कहाँ पहुंचा? उस्ताद दूर, बहुत दूर. एक सदर, सदर के बाद वजीर आला, फिर गवर्नर, और वहां से होते हुए एक खाकी आलीशान इमारत. इमारत का सहन, सहन में अजीब उलिया का मदारी. मदारी हाथ में डुगडुगी, बगल में बच्चा लिए कह रहा है कि क्या कह रहा है? घूम जा झूम जा. बस कर बच्चा, उस्ताद की नकल करता है. अरे उस्ताद नकल नहीं करूंगा तो पास कैसे होऊंगा? उस्ताद के पास आओ बच्चा, उस्ताद तुझे पास करेगा. शाबाश. घूम जा. उस्ताद घूम गया. झूम जा. अरे झूम गया. बता अब कहाँ पहुंचा? उस्ताद बोल्टन मार्केट. शाबाश. लुंडे का माल ले रहा है लड़के. अरे नहीं उस्ताद, एक मदरसे के सामने खड़ा हूँ. मदरसा? अरे बच्चा निकल जा वहां से, वहां के मास्टर ने तुझे पकड़ लिया तो मौला बख्श तुझे बख्शेगा नहीं. अरे नहीं उस्ताद, ये मदरसा नहीं, ये तो बुनियाद है इस वतन की. क्या मतलब? मतलब समझाने के लिए उस्ताद तारीख में जाना पड़ेगा. चल फिर घूम जा. घूम गया. झूम जा. उस्ताद झूम गया. बता अब कहाँ पहुंचा? उस्ताद वजीर मेंशन. वजीर? अरे बच्चा क्या देखता है वहाँ? उस्ताद एक दुबला पतला बच्चा रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा है. The conqueror of the heart is the conqueror of the world. The conqueror of the heart is the conqueror of the world. The conqueror of भाई, इतनी रात को क्या कर रहे हो? देख नहीं रही, मैं पढ़ रहा हूँ. पूरा मोहल्ला बल्कि कराची सो रहा और आप पढ़े हो, क्यों? क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ. इंशाल्लाह भाई, आप एक दिन बड़े आदमी जरूर बनेंगे. देखा उस्ताद, छोटी सी उम्र का बड़ा आदमी. हाँ बच्चा, तारीख गवाह है कि इस बच्चे को तालीम से बहुत मोहब्बत थी, तभी तो कुदरत इसे मादरे इल्मी ले आई. अरे पर उस्ताद मादरे इल्मी? हाँ जाना चाहता है वहाँ. चल फिर घूम जा. उस्ताद घूम गया. झूम जा. अरे झूम गया. बता अब कहाँ पहुंचा? उस्ताद इल्म हासिल करने के लिए आओ और खिदमत के लिए जाओ. एंटर टू लर्न एंड गो फोर्थ टू सर्व. हाँ बच्चा, लिहाजा इस बच्चे ने इसी को अपना नस्बुलैन बना लिया, तभी तो कुदरत ने इसे साथी भी वही दिए जो सरे कारवां बने. हाँ उस्ताद, सर शाहनवाज भुट्टो, एके ब्रोही, अब्दुल्ला हारून. शाबाश बच्चा. चल फिर घूम जा. घूम गया. झूम जा. झूम गया. बता अब कहाँ पहुंचा? उस्ताद मादरे इल्मी के दानिश कदम है, जहाँ दो नौजवान तालिबे इल्म मुमलिकत खुदादाद की बातें कर रहे हैं. हाँ बच्चा, दिखा दे सबको तारीख के झरोकों से इन हम जमातों के अज़ाएं. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. तुम सुना अब्दुल्ला हारून? बस पढ़ाई और अम्मी की खिदमत. मुझे तुम पे रश्क आता है, तुम जन्नती हो. मुझे तुम पे रश्क आता है, तुम बहुत मेहनती हो. वैसे किन सोचों में गुम थे? दोस्त, हम मुसलमान हैं. सर सैयद ने हिंदू मुस्लिम की जो तफरीक बताई, साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि हम अंग्रेज़ों से तालीम में कहीं पीछे ना रह जाएं. जभी इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे इस इदारे के बानी हसन अली आफंदी ने इसे कायम किया. हाँ बिल्कुल ठीक. सर हसन अली आफंदी भी वकील थे, मैं भी वकील बनूंगा. वाह बहुत खूब.
वैसे वकील बन के सबसे पहला मुकदमा किसका लड़ोगे? मैं मुमलिकत खुदादाद का। शाबाश बच्चा शाबाश। हाँ तो ख़वातीनो हजरात, आपने देखा बचपन से लड़प्पन तक बड़ा आदमी बनने की जुस्तजू। हाँ तो उस्ताद वही थे मोहम्मद अली जो वकील बने और जनूबी एशिया के मुसलमानों का मुकदमा लड़े। पर उस्ताद अवाम जानना चाहती है कि वो वकील बने या मसीहा? अरे बच्चा, इस अवाम की पीढ़ी जानती है कि वो वकील होके मुसलमानों का मसीहा बना। अरे उस्ताद, पर एक वक्त में 2 डिग्रियां, ये अरे कैसे? बच्चा, ये बातें समझने की हैं, समझाने की नहीं। शाबाश, घूम जा। उस्ताद घूम गया? झूम जा। झूम गया। बता अब कहाँ पहुंचा? उस्ताद, मुस्लिम लीग के इजलास में, जहाँ ये नौजवान सारे मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज है। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर इसी तरह तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही तो हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अरे साईं, काहे तो तुम ज्यादातर अंग्रेजी में किताब करते हैं। हाँ तो हम वो भी बड़े शौक से सुनते हैं, बल्कि शुरू से आखिर तक सुनते हैं। वाह जी वाह, तुमको समझ भी आती है कि वो क्या कहते हैं? ना जी ना, समझ तो नहीं आती, लेकिन इतना जरूर जान लेते हैं कि वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, इसीलिए तो वो कायदे आज़म कहलाते हैं। कायदे आज़म जिंदाबाद, जिन्होंने दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ तो उस्ताद वो थे दुबले पतले मोहम्मद अली जो वकील बने, मुसलमानों का मुकदमा लड़े, कायदे आज़म बने और नारा दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, और जिन्होंने इस मादरे इल्मी सिंध मदरसतुल इस्लाम का सबक इल्म हासिल करने के लिए आओ और खिदमत के लिए जाओ को ऐसा लिया कि आखिरी सांस तक निभाया। हाँ बच्चा, कायद के नक्शे कदम पर चलना चाहता है? उस्ताद चलना चाहता हूँ। इल्म हासिल करना चाहता है? उस्ताद करना चाहता हूँ। चल फिर घूम जा। उस्ताद घूम गया। फिर झूम जा। झूम गया। बता अब कहाँ पहुँचा? उस्ताद सिंध मदरसतुल इस्लाम। हाँ बच्चा, बता वहाँ क्या देखता है? उस्ताद देखता हूँ कि यहाँ कुछ तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। मैं इस इदारे का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। ये इदारा मेरे लिए एक दर्सगाह तो है, लेकिन इसके कुछ मुमताज़ पहलू ऐसे हैं जो इसे हर इदारे से मुमताज़ करते हैं। इसमें कायदे आज़म ने तालीम हासिल की है। मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि इसकी संगो खिश्त की इमारतों में वो हवाएं रकम हैं जिनमें कभी कायदे आज़म हवा लिया करते थे, सांस लिया करते थे। इसके बागीचों में, इसकी दरसी जमातों में, इसके दरो दीवार में वो तारीख़ रकम है जो कायदे आज़म से वाबस्ता है। वही कायदे आज़म जिसकी इस मादरे इल्मी ने 4 साल तरबियती परवरिश की है, और फिर जब वो बुलंदियों की परवाज़ को निकले तो इस इदारे का तारुफ बन गए। हाँ, मैं इस इदारे का अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन अब ये इदारा मेरा भी तारुफ बन गया है और मुझे यहाँ कायदे आज़म का दस्ते शफ़क़त बराह रास्त अपने सर पे मालूम होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट में पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया। इन्वायरमेंटल सिनेरियो इन पाकिस्तान के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज मिस अमरीन अजीज़ ने सरअंजाम दिए। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची डॉक्टर शाहिद अमजद ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान में मौसमियाती तगय्युर की मुख्तलिफ वजूहात पर रोशनी डाली। And especially for Pakistan, we have glacier melts, we have sea level rise, we have erosion of coastal areas, there is erosion. Also there is a problem with some of these coastal areas, coastal communities might be feeling that. So all these are factors that can impact globally. जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से माहौल दोस्त अशिया के इस्तेमाल पर बात करते हुए चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग महरान यूनिवर्सिटी जामशोरो डॉक्टर जीशान खत्री ने कहा कि हर शोबे में रिसर्चर्स को चाहिए कि ज़ीरो वेस्ट स्ट्रेटजी पर काम करें। If I'm the textile engineer, so I should contribute something as the fabric or the clothing that can address the environmental issues. At least we should be responsible. We do not produce waste. Yes. At least this is the at least we at least if we are not if we are not producing something green, at least we should consume green, right? We should have an approach of the green consumption, I would say. For example, the use of the PET bottles, use of the straws. I think as a researcher, if we can produce the materials, or I belong to textile, or if we are an environmentalist, we should contribute to the zero waste strategy. पैनल में शरीक माहिर माहौलियात मोहम्मद अली ने शुरा को ज़ेरे ज़मीन पानी की संगीन सूरत हाल से आगाह किया। Water scarcity is a global phenomena. First you have to understand the thing in the right perspective. Currently अगर आप बात करें तो 1% डिप्लीशन है ग्राउंड वाटर का वर्ल्ड वाइड। अब आप कहते हैं बारिशें हुई हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पानी डिप्लीट क्यों हो रहा है? असली बात ये है कि आप क्या हिस्ट्री की बात करें, 2023 में 2000 में आप पीछे चले जाएं, मोजेस के टाइम में -1400 BC पे चले जाएंगे, और पीछे चले जाएं 10,000, 50,000, -50,000। What has taken millions of years for the water to go into the ground? आपकी पॉपुलेशन जिस तरीके से उसको खींच रही है पानी को इस्तेमाल के लिए, it's a reasonably cheaper source than going and point Karachi to purchase water। अगर आपको साफ पानी ग्राउंड से मिल रहा है आप निकाल लें। माहिर उमूर सेहत डॉक्टर मिनहाज अहमद ने मौजू पर गुफ्तगू करते हुए माशरे पर माहौलियाती तगय्युर के असरात पर इजहार ख्याल किया। मैं बेसिकली एनवायरनमेंट को सिर्फ ग्रीन पर्सपेक्टिव से नहीं देखता हूँ, मैं एनवायरनमेंट को एज अ टोटल सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट ही हमारी सोसाइटी बनाता है। सोसाइटी में ही हमारे बच्चे ग्रो होते हैं और उनको वो तहजीब और रफ्तार मिल रही होती है जो उनको फ्यूचर के लिए चाहिए होती है। पैनल के इख्तिताम पर चेयरपर्सन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा रहमान और एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग महरान यूनिवर्सिटी जामशोरो डॉक्टर अवेस खत्री ने शुरा को शील्ड्स पेश की। बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे, जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में कोस्टल क्लाइमेट चेंज चैलेंज के उन्वान से लेक्चर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। साबिक वफाकी वजीर और चेयरमैन वाटर इन्वायरमेंट फोरम निसार अहमद मेमन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तगय्युर के चैलेंज से निमटने के लिए पानी, खुराक और तवानाई के सिक्योरिटी प्लान्स तरतीब देने की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पोर्ट्स और साहिली पट्टी मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मुआविन साबित हो सकती हैं। Indus ends up with a delta, and delta is so rich with mangroves, which is one of the heritage site, international UN site you have, the mangrove site, which is the large one. There are a couple of other countries which are also mentioned. 2 districts are covered with the mangrove. One is the Karachi district and the adjoining district of Thatta. And Thatta, another historic place where you have bamboo, you have all the rest of things. But in terms of the coastline, it is the part of the delta is coming into is the district of Thatta. I think we have one of the long coastline which is about 1,000 kilometer long. It is so rich, I sometimes wonder if only we could be rich in our economy and in various aspects as rich as the coastline is. Now in this you have also the 3 ports, one being the newer one, the Gwadar, which is coming up, visited several times, and Gwadar is one, and the 2 ports that you have is right here in Karachi, in Sindh. So out of those 250, you have 2 Karachi Port Trust, which is so close by, and Port Qasim on the other side. So these are the 2 ports. In my view, it is a gateway to the world, because whether you go to the Indian Ocean or whether you go to the Persian Gulf, whichever side you take, it is a gateway. तलबा को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताते हुए निसार अहमद मेमन ने कहा कि अगर 2075 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल ना किया जा सका तो जमीन पर इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। Clean water and sanitation. Just think how important they are for life. Clean water. This is a human right. This is not only requirement, it's a human right internationally accepted, and in your constitution too. Then SDG 12 is responsible consumption. If you open the tap and you think it's my water, you are not being responsible. Renewable energy, which is 7th goal. Pakistan's hydel is, just remember, we have dams, we have these. Hydel, we only used 11% of the potential. The rest of the 89 is untapped. Just imagine. And hydel is the cheapest, cleanest form, but right now it's a lot of time consuming, therefore we have to go to the solar and the wind. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत कम कार्बन इमिशन के बावजूद आलूदगी से शदीद मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। We, Pakistan, is 0.08% of the contributor to the carbon emission, but we are the 5th large, among the 5th. Sometimes it's 3, sometimes 8. Let's say among the 5 or 10 largest sufferers, affectees are we. So therefore we must be bullish about it. इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने कहा कि हमारे पास नौजवानों की सूरत में बहुत बड़ी एनर्जी मौजूद है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम माहौलियाती तब्दीलियों से बखूबी निमट सकते हैं। उन्होंने साबिक वफाकी वजीर निसार अहमद मेमन का शुक्रिया अदा किया और शील्ड पेश की। सारा बेटी, आपकी अम्मी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। ठीक है अशरफ अंकल, मैं बस्ता लेकर आती हूँ। सारा, तुम अपनी अम्मी को फोन करके तो पूछ लो। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? अम्मी, मैं अशरफ अंकल के साथ घर जा रही हूँ, ठीक है? बेटा, मैं रास्ते में हूँ, किसी और के साथ नहीं जाना। देखें जी, हमें इजाजत नहीं है बच्चों को अजनबी लोगों के साथ भेजने की। अम्मी! बच्चों, कभी भी अपने वालिदैन या सासा को बताए बगैर किसी के साथ कहीं भी ना जाएं। मजीद मालूमात और शिकायत के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन 1099 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ लैंडलाइन, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। ये पैगाम आप तक पहुंचाया है शहरी पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने। Thank you for inviting me to be one of the speaker which you do, I believe, on every Tuesday. And particularly I am thankful to
Shoaib Saab, Huda Saiba, and your President Ajaz Saya for giving me an opportunity to be with you in this afternoon. So this was just a thank you. I just wanted to say, don't want you to leave. So the topic which I love to speak always, I am so fond of this phenomena towards the development of this country in terms of the higher education. So I will try to give you some background that how the higher education has been evolved in this part of the world and how we have taken and what has happened around and how the world's background is towards the higher education. Now when we talk about higher education, we assume that we get a child, we get a youth who has come across from the primary, secondary and higher secondary education. And I selected two lines of my lovely poet, Shah Latif, a poet of 17th century. And he says, Allah dahi mathyan, Allah dahi mathyan, dahyu dukh disan. It's very interesting. In the same way, if we look at Sophocles, who was a Greek tragedian, and he said that all 2000 years ago to him. And he said, when wisdom brings to profit, to be wise is to suffer. So the both are almost in the same line and on the same direction. And why I have quoted that? Because I see that a student, a child who comes from the primary education to the university, when we talk about higher education, we are saying and we understand that that's the university education we are talking about. So, you know, a student when reaches to the university, and in parallel, a teacher who teaches at primary, who teaches at secondary and higher secondary, college, and the education and the university, the responsibilities increases, the wisdom increases, and that's why if you are a teacher, if you really fancy to be a teacher at a university level, you must understand these lines, and that's why, ladies and gentlemen, I wanted to quote it. Next, please. Now, there are many definitions when we talk on the higher education, but I just wanted to have a formal definition to make you understand. I hope all of you understand, but just have a quick go through that. So, in simple words, a component of a post-secondary or third level or tertiary education is an optimal final stage of formal learning. So, as I said already, that how it moves from your primary education to the university education. And then according to the UNESCO 2011 declaration, the undergraduate's study terminates, and which we call is a level 6, then the master's at a level 7 and the doctoral at level 8, whereas 4 to 5 are related to the non-degree level education which comes through the continuing education and the further education. So you see, this is how, but to me, frankly, this is a very formal definition of the higher education, but to me, the responsibility of the university is to groom a child, is to groom a youth, to make him a responsible citizen, to make him a human who shall serve the human beings and bring the peace and development to his or her country. Now I just wanted to take you a little bit back, that how the education is evolved on this globe. So you see, Greeks and Romans, I quoted, Greeks and Romans had no universities.
they did not have any concept of the university. There was no formal education. There was no any brick and mortar or the libraries, laboratories, or whatever you call it. But, and the same way, if I've just quoted again Socrates, and what I said that here is that a great teacher like Socrates gave no diplomas as compared to a modern student. You see, in today's time, if you call a student for 3 hours maybe, and have a chat with him, and she looks for, she looks for a very formal sort of a certificate at least. He will be interested. So that's why I quoted him, that in the time when there was no formal education, how the people and how the population of that time went for learning and what was their passion and how we do it nowadays. Can we go back? So then the 12th and 13th century, which is the Middle Age, and then that's the Europe I'm talking about. So the education, the higher education evolved in the 12th and 13th century into the Europe, and from the Europe we got it from UK and from the British to the subcontinent. And as you know that the two famous universities from the UK which have moved and brought the education, which is of course Cambridge and Oxford. But I will go to let you know that the first two institutes, please. So in other words, we say that we are the heirs and successors not of the Athens and Alexandria, but of the Paris and Bologna. Now the Paris and the Bologna, these are the two universities. Those were institutes and became universities, and those are the two pillars which brought a formal education into the year of 1119 and 1088 into the world, and then we started to understand the education. So and what I am trying to say here is, you see nowadays, as Huda was talking about me, and she said Professor Maimun or Professor Sarah is a founder of this and that, and I have become very happy, and so all of us. But look at that, the time, when there was Oxford, which cannot be ascribed to the King Alfred, when the Bologna, which did not go back to Emperor Thucydides, and Paris did not exist in the time of Charlemagne. So these are the virtues, these were the thoughts, and this is how, and when we talk about that, how to compare with the 10th and 11th century people and their learning, and today what we stand. And the interesting thing is that in that Middle Ages, there were the 7 liberal arts, which were grouped into the 2 groups. Those groups were Tritium and the Quadrivium. The Tritium included grammar, rhetoric, and logic, whereas Quadrivium included arithmetic, geometry, astronomy, and music. Now, ladies and gentlemen, look at that. I remember my father, Taj Sehrai, teacher himself, archaeologist, historian, educationist. You see, when I used to sit with him, I being myself a mechanical engineer, and when he started to talk, and when he used to talk with me, you name it, he will talk on music, he will talk on art, he will talk on astronomy, leaving aside his interests, which was archaeology, culture, and history. So this is the where, to be very honest, at the moment, our youth and our universities are lacking. We are just trying to build, and we are just trying to groom. Of course, these are the requirements of the 21st century, where the people are living in this challenging world, and they look for shortcomings and having a quick outputs. But then, to be very honest, we are not producing a university graduate. I tell you, when my father founded the Talbul Mullah High School, Dadu, which is now the largest school in that district, I'm talking about early 50s. And really, when I read that, and I realized he started music at that time in the school.
I still remember one of the mashhoor gharana gayak, Ustad Saleh Sant. He, जब वो गाता था और मैंने खुद देखा कि हमने मौसमों को उसके गाते हुए चेंज होते हुए देखा. तो that was all the education. That was, I am talking about secondary education. I am not talking about the university education. और अब मुझे बताएं, I am the part of this whole business, but tell me which university has a music is optional, even not compulsory, I shall say. Anyway, I have a little time, I'll go forward, please. Now coming to the Pakistan, because that's what we have to look at. Look at that. We have, when Pakistan came, we had only the two universities. That was the Punjab University, which had around 700 students. And then 4 months before existence of Pakistan, one of the famous university, which is the mother universities of the Sindh province, which is Sindh University, was established in April 1947. But that university at that time when Pakistan created was just a machinery to monitor the performance of the colleges, was involved in academics. But anyway, then in the first decade, we see here, there were only 4 universities. Then in the next decade, we see 10, number reaches to 10, then it reaches to 18. Now this is the period, frankly speaking, which is between 68 to 77. I hope you recall Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who came into 1971. And that gentleman brought a lot of changes in education. That's a debate, we can debate on many other aspects of that educational time as well. But the good thing was that the number of the universities increased, the budgets of the universities increased, the VN created. There was no VN. Before I will take to the next, that was the Qaid-e-Azam, and how he saw the conditions at 1947. But before, I will go that, but at the moment, because I'm sharing this where we have, so this was a good period, frankly speaking, between 68 and 77. The universities, though reached at a still low number, 18, but then, there's an era which is 1988 to 1997, 43 universities. Then in the next decade, we reached to the 110. But now, if you ask me how the higher education came into the Pakistan, I have no doubt and I have no hesitation, and I must appreciate the vision of Dr. Ataur Rahman. If anything happening today, or if there is any development today, we see it, credit goes to him. Credit goes to I was talking with the gentleman here when we were he talked about that the gentleman is coming from Boston. So I told him that the Boston think tank, which brought US and Pakistani citizens together, and that think tank basically forwarded a lot of recommendations for the development of higher education, and those recommendations were given to the government. Zubaida Jalal was then education minister, and she actually made a 21-member task force headed by Qasim Lakha and Ishrat Hussain and some more. And so the Higher Education Commission came into existence, which is still existing. Then today, as a situation is that in the 2023, at the moment we have 247 universities in this country. Out of that, 100 are private and 147 is public. If we come to the Sindh, excluding Karachi, then we have 41 private universities. Total in Sindh, we have 41 private universities and 30 public sector universities. And if we talk about Karachi, then we have 38 private universities and 9 public sector universities. The only thing went in that era was the
mushroom growth of private sector universities. It is a debatable again, and we don't forget the Aga Khan is also a private university. The Habib University is also a private university. IOBM is also a private university. These are the universities for which all of us are proud. Doesn't matter if we look into the various other aspects. But universities were established, and similarly, one of the, we talk access of the education at doorstep. And I always give my example. This is Mujib, and I did my primary and matriculation education from Dadu. As I said, I was a student of my father as well. I did my matriculation from the same school. But then one or other way, I don't know, and still I don't know. My father, we were very well settled in Dadu, and there was a very good college. He decided that I shall move to Karachi. And I came to Karachi and I did my intermediate from DJ Science College in 1981. And I tell you, ladies and gentlemen, if my father would have not decided that, and if I would have not come to the Karachi, I don't know what would I have been. Leave aside then, I went to the university, leave aside that I went for higher education to the UK. But the decisive role in my career was a move from Dadu to Karachi. Though there were many things. I shall skip because of the time. So, there is a phenomenon, there is a very common and a political slogan. A person wake up in the morning and say, I want to establish a university. I want to make this campus to the university. And this is how, unfortunately, we have enclosed ourselves in a huge net where there is no ventilation. We are consuming a lot of our budgets, which are very restricted otherwise, on the mushroom growth of the campuses and the universities, which are not really being monitored. Their quality is highly debatable. So anyway, I will go forward. So the education policies, I just wanted to give you a quick review. So the first education conference, and I wanted to quote Qaid-e-Azam. There's a speech in November 1947. And what he says, look at that. In 1947, there is immediate and urgent need for giving scientific and technical education to our people in order to build up our future economic life and to see that our people take to science, please. Hello. Take to science, commerce, trade, and particularly well-planned industries. We should not forget that we have to compete with the world, which is moving very fast in this direction. This is what he said in 1947. Unfortunately, he did not remain much with us. I am being the Vice Chancellor of his alma mater. He remained in Sindh Islam for 5 years, from 1887 to 1892. The highest period of his academic career he spent with us, and there's another lecture I will give inshallah sometime. Next. So the education policies have moved, and all these education policies have involved the higher education. It has a component of the higher education. So we saw, 1959, 72 to 80, these were all the VNs and all the policies, 79, 92, 89 to 2010, 2001 to 2004, 2009. So, under these all, of course, some outputs were achieved. Some outputs were distinguished. During that time, we shall not forget, Pakistan went through a very rough political, economical, and lot of tragedies and lot of calamities. We saw wars, we saw flood, we saw political setups. We went through the 3 constitutions and around 4 supra-constitutions. So education is a part of your life.
whether it's the primary, secondary, or higher secondary, or university. It's the part of your life. It's the part of the country. I remember when I applied for the post of, can I have 5 more? Thank you. It's a good afternoon. We can talk. I think we shall not rush. So you see, I remember when I appeared for first time for the Vice Chancellorship of Sindh Agriculture University, Tadojam. So one of my friend, I don't want to take his name, quote him, but a very good friend. He's still, nowadays he's also Vice Chancellor. So he came from the interview and I said, how was that? And he said he gave a very, I said, आपने क्या कहा? So कहा मुझसे पूछा उन्होंने कि कैसे देखते हैं आप हायर एजुकेशन को पाकिस्तान में? तो मैंने कहा जैसे पाकिस्तान है वैसे ही मैं हायर एजुकेशन को भी देखता हूँ. तो मैंने कहा फिर तुम आज सेलेक्ट नहीं होगे एटलीस्ट. So anyway, what I'm trying to say is, it is a part of our life. So the higher education or the education has gone through all these ups and downs. But that's very important now. That is the 2010 सेनेटर साहब बैठे हैं, वो इसके पार्ट रहे होंगे हमारे इस 18th amendment के. That's very important. That is the time where all the federal chapters, most of the federal chapters went and came down to the provincial level. And then we saw a lot of development towards the development of even provincial higher education commissions. Like now we have a Sindh Higher Education Commission, Punjab Higher Education Commission, and there is also, I believe, in KPK, except Balochistan, there are now 3 higher education commissions. I had a lot of reservations towards a quick migration, towards a quick transition from federal HEC to the provincial HEC. But today, I must say, and I must admit, that the Sindh Higher Education Commission is doing a very good job. And really, today I tell you, if Sindh Higher Education Commission did not exist today, we would have been in a lot of troubles. And most of our old universities, like University of Sindh, Karachi University, Shah Latif University, Agriculture University, Tandojam, and so many would have almost closed or bankrupted. Now there is a debate. We can talk the utilization of funds and all that, but already I am short of time. I will move. So this just give you a quick look at the moment. We have moved from, just I'm sharing. So look at that, the enrollment, which has moved from 1.2 million to now 2.2 million, including our, I have given and shared male and female population. And again, you see, it's a very good thing to see that our female population is also going side by side with our male population. It's not quite away from the male population. Next. This is also very interesting figures. I wanted to share the faculty. At the moment, we have around 57,000 faculty, and out of that, we have 20,000 PhDs. So which is like a 35% of the around the whole country. The faculty which exist in the universities is PhD. अब ये मुझसे नहीं पूछिएगा कि PhD में फिर क्या क्या होता है. That's another thing, and we'll talk sometime, or maybe on the lighter side, have a cup of coffee. But majority of the things are in a good direction, in a good track, and that's where I will say that we are not in a, it's in better shape. So you see how we have moved from 17 to the 2021. At that time we had a PhD faculty 30%, and the male faculty were like 75%, and female faculty, PhD faculty was 24. Overall female was 36 and the male 63. So it's a good sign, I see, and I'm very happy to see our female population is taking interest towards the teaching, and they have become a very vibrant part of the universities, and they are really serving in a very right direction. Next, please. This is also very alarming, very alarming. This is how the survey I have quoted here.
This is how when we say people ask you a very famous question, what is the literacy rate of the country? And we have a lot of figures to share and different definitions. In Pakistan, let me tell you, ladies and gentlemen, that the definition of the literacy is, can you read whatever in your mother tongue? That is the definition of the literacy, which is still even 57 to 58%. But look at that figure. You know, leaving aside the pre-primary, which is maybe a post class, maybe a classified class, which has a 14.4 million, but we drop, you see, primary education, this is where we start, 25.7 million, and the next stage is the middle section, where 63% child drop. This is how we are moving in present times. 63% children are dropped from the primary education to the middle education. Then we reach to the 9.3 million, 4.9 million, where again in a secondary education we have a 47% drop. Then if we come to the higher secondary education, we have still 28% drop. Then if we come to the university education, which is just 21% again drop. But the interesting thing is on your left side, see, we start from 25.7 million from the primary, and we reach in that university is just a mere figure of 2.76 million, which is like 87% students from the primary education to the university do not reach to the university. I have shared with you the number of the universities and the mushroom growth of universities, I must admit that. But then the other side is also very alarming. Whatever the situation is, whatever the reasons and rationale are, but it is the fact that you are just 13% student basically reach from your primary education to the university education. And when I was talking about the various policies which are being driven and which are being designed and to a certain extent were implemented, then one of the major factor was that we shall have 20% population from primary education to the university, which still we have not achieved. Next please. This is just wanted to share, वो मैंने सिर्फ दो मुल्क नहीं रखे यहाँ पर, हम always we are interested to compete with the India. मुझे याद है एक गांव में दो दोस्त थे, गुल्लू एंड वल्लू. तो Mr. Uda, I'll take 2-3 minutes. I know you are very restricted administrator. It's just, तो वहाँ पर दो होते थे, गुल्लू और वल्लू, गुल मोहम्मद एंड वली मोहम्मद. तो जब इम्तिहान हुआ तो गुल्लू फेल हो गया, गुल्लू फेल हो गया. कोई है तो नहीं गुल्लू यहाँ? तो वो जब गुल्लू फेल हो गया तो उसके माँ बाप बड़े परेशान हुए. उन्होंने बड़ा उसको प्रेस किया कि तुम ऐसे हो वैसे हो. सारा दिन उसका सबक लेते रहे, मारपीट भी थोड़ी सी की. नेचुरली वो बच्चा रोने लगा. तो वो जब शाम हो गई, कहा बाबा अब चलो ठीक है, अब सब ठंडे हो गए. गुल्लू रो रहा है, गुल्लू रोना बंद ही नहीं कर रहा है. तो रात हो गई, सारे परेशान हो गए. बाबा अब वो माँ बाप माफ़ी मांगने लगे, बेटा अब हमें माफ़ कर दो, फेल हो गए, अब पास हो जाना, हमें छोड़ दो. वो बस ही नहीं कर रहा है. तो आखिरकार उससे पूछा, बेटा क्या मसला क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा, मुझे ये मसला नहीं है कि आपने मुझे मारा है या मैं फेल हो गया हूँ. मुझे मसला ये है कि वल्लू पास क्यों हुआ है, ये मुझे मसला है. हम सारा दिन इकट्ठे थे, ये पास हो गया, मैं फेल हो गया. So please do not compete to the very inner or very, it shall not be restricted. If somebody is doing good, we shall appreciate. If somebody is not doing good, we shall rather suggest him to improve upon. So this is why I quoted some countries, that how they are. And the important thing which I wanted to share through this data, which is very important. कल मैंने हुदा को कहा था कि I will just extempo, I will not share and will have no presentation. But that particular slide forced me to make a presentation, frankly speaking. Now look at that, Finland. Because I wanted to share the GDP, which is very important, that how much we really invest into the education.
So it's just, I'm talking about the whole education, it's not higher education. 6.9% by Finland, and Pakistan at the bottom, which is 1.7%. That was also the time before the higher education, before the Ataur Rahman, it was even went to the 0.73, which is at the moment now 1.7. So you see how it relates. First is your GDP, then is your literacy rate, and then is your HDI, which is the main factor of the, which is the main output of the higher education. So look at that, the Finland is 0.94 and we are at 0.54. Shortage of time, I won't talk much. Next. So these are the 10 reasons which I can share with you, and you can have a copy of it, that why the Finns and why the Finland education is a good model, why they are contributing as HDI across the world at the highest rate. So I could have talked, but again I will make it. Thank you. So just way forward, we have to go towards the आज 2 महीने पहले एक ट्रेनिंग हुई, एक गोरा आया हुआ था और हम वाइस चांसलर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, तो मुझसे पूछा, मैंने कहा, उसने कहा हाउ द वाइस चांसलर कैन बी ए स्ट्रॉन्गर, मुझसे कहा कि हाउ द वाइस चांसलर कैन बी स्ट्रॉन्गर. मैंने कहा देयर इज नो नीड टू अ वाइस चांसलर टू बी स्ट्रॉन्गर, देयर द नीड दैट अ वाइस चांसलर शैल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर फोरम्स स्ट्रॉन्गर, शुड नॉट फॉरगेट दीज फोरम्स. अगर आप इन फोरम्स को लेकर चले तो आपकी हायर एजुकेशन भी अच्छी होगी, आपका इदारा भी अच्छा होगा. सो द बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ फैकल्टीज, एकेडमिक काउंसिल, FPC, syndicate एंड सेनेट, ऑल आर द पार्ट ऑफ द यूर एक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी. इनको फॉलो कीजिए, हम सबको फॉलो कीजिए, करना चाहिए जो जो जहाँ पर बैठा हुआ है. नेक्स्ट प्लीज. द सेकंड इज द स्ट्रेंथनिंग द ऑफिस. ये बड़ा अच्छा हुआ है रिसेंट टाइम्स में. वी हैव a QEC, we have ORIC, which is our Research, Innovation and Commercialization, Youth Development Center and University Development Office. ये जो ऑफिसेज HEC के थ्रू ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप हुई हैं, दे आर रियली प्लेइंग अ वेरी डिसिसिव रोल. आई कैन स्पीक अ लॉट बट अगेन आई विल लीव इट. And the strengthening of the 3 stream. There is always 3 stream resources of financial, because a lot of debate is there that how the utilization. तो आप देखें कि हमें ये इस पे काबू करना है. आई एम कमिंग. गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ GDP, रेशनलाइजेशन ऑफ फी स्ट्रक्चर. हमारे यहाँ बड़ा ये थोड़ा सा स्लोगन हो जाता है, हम गरीबों को मुफ्त में तालीम देंगे. आप गरीबों को ज़रूर मुफ्त में तालीम दें, मगर अमीरों को तो ना दें. तो आप जब पब्लिक सेक्टर में बैठे हुए हो तो आपके लिए गरीब अमीर की कोई हैसियत नहीं है. गरीब भी वही फ़ायदे ले रहा है, अमीर भी वो ले रहा है. हो यूँ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत पीछे जा रही हैं बिकॉज ऑफ नॉन रेशनलाइजेशन. तो गरीब को बिल्कुल मौका देना चाहिए, गरीब को स्कॉलरशिप दे, मगर उसको मेरिट पे देनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी. आजकल हमारे बासेस बहुत हो गए हैं, पाकिस्तान में बासेस बहुत हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के. मेरे बास बताऊँ आपको कितने हैं. मेरा बास पहले फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर है, फिर मेरा बास चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है, फिर मेरा बास चीफ मिनिस्टर सिंध है, फिर मेरा बास मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स है, फिर मेरा बास चेयरमैन सिंध HEC है, फिर मेरा बास सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स है. और नीचे तो बहुत सारे हैं जिनको मैं बास तो नहीं कह सकता, लेकिन दे प्ले लाइक दैट. तो वहाँ पर हमें कंट्रोल करना है. यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमी, जब ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो ग्रीक और अलेक्जेंड्रिया मैंने शेयर किया, उसका पर्पज़ ये था. और जो जो 2 यूनिवर्सिटीज़ मैंने, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस मैंने कोट की, तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी ऑटोनॉमी और बड़े लिबरल तरीके से पढ़ाया. और आज तक उन्हीं के फ़िलासफ़र, उन्हीं के थियोलॉजिस्ट, उन्हीं के एक्टर्स, उन्हीं की म्यूज़िक हम सब सुनते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मुझे पता है यहाँ पे बड़ा टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है. प्रोफेसर को जब खड़ा करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको रोकना. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर मीनन. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन री इमेजिनिंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन एंड पेडागोजी के दूसरे रोज़ पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया.
री-इमेजिनिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अजब अली लाशारी ने सरअंजाम दिए। वाइस चांसलर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा सज्जाद ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए नौजवान नस्ल को अपना किरदार अदा करना होगा। Education is not something which is working above the society. It is something which is working within the society. So we cannot say that education will change everything. Rather, education itself is changed by the society. So whenever we want to bring some sort of changes, we always expect that education system can do that thing. If we talk about the sustainable development, sustainable education, then we should remember that the education system itself should be sustainable, and we should bring certain policies, and we should prepare our young generation to be responsible citizen. एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ज़ैबिस डॉक्टर नजमुन निसा ने मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने तदरीसी तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। Sustainable education is all about promoting global citizenship. Sustainable education is all about inculcating the concept of life skill based curriculum or life skill based education in curriculum, because now the learner is a global learner. Now the economy is considered as a global economy, so we need to improve our curriculum, we need to improve our teaching practices. असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डॉक्टर बुशरा खुर्रम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में दरपेश ग्लोबल चैलेंजेस से निमटने के लिए सबसे पहले हमें असातिज़ा के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। All emergencies, whether they are educational emergencies or all kinds of challenges and gaps, whether they are educational or of any other kind, can be dealt with what we call vision, planning and care. I think these are the three key words, because if we have the vision, if we plan according to our vision, and if we care to put it into action, then any challenge or learning gap can be met and dealt with. As far as teacher training is concerned and classroom is concerned, what I would say is, to be able to address any gap or any challenge, you need to acquire the relevant knowledge, skills, attitude, as well as the values that value that challenge or closing the gap, so that you can put it into the classroom and into the educational scenario. शोबा तालीम इकरा यूनिवर्सिटी कराची की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम बानो काज़मी ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तलबा तक पहुँचाने के लिए असातिज़ा को पेशावराना तर्ज़ अमल अपनाने की ज़रूरत है। Two things are needed: professionalism in teachers and resourcefulness. A teacher should be resourceful. A teacher should be a professional in her conduct, in her duties and all this. Through that process, we can convey and mold our students to fulfill these goals. पैनल के इख्तिताम पर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर जाहिद अली चनर ने शुरा को शील्ड्स पेश की।
जी नाज़रीन को ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते हुए चलते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। बारिशों की वजह से सिंध के काफ़ी इलाके सैलाब का शिकार हो चुके हैं। सैलाब की लपेट में आने वाले इलाके हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, कंडियारो, लोग रेस्क्यू के मंतज़र हैं।
परेशान मत हो, ये नाकानी आफत तो टल जाएगी। सब्र तामुल से काम लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो और इंशाल्लाह अपने कुछ ठीक होंगे। ठीक है, जाके पढ़ाई पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी आबिद, मेरी बात सुने। शाहिद भाई से बात हुई है मेरी, वो बहुत परेशान थे। दोनों ठीक तो है ना? अम्मी तो ठीक है ना? अम्मी और शाहिद भाई ठीक है, लेकिन गांव के हालात बहुत बुरे हैं। हर जगह सैलाब आ चुका है और जो हमारा घर था वो भी बह चुका है। मुझे लगता है आपको गांव जाना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। बच्चों आप असाइनमेंट नोट करके लेकर सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात आपसे मुझे बहुत जरूरी बात ये करनी थी कि जैसा आप सबको पता है सूरत के बारे में हर तरफ सैलाब है, बहुत सारे गांव, बहुत सारे घर पानी के अंदर हो चुके हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में अपने प्यारों का और उनके प्यारों का साथ देना चाहिए। इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि कल से हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक ब्लड रिलीफ कैंप लगाएंगे। उस कैंप के अंदर हम डोनेशन और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करके कंडियाल के लिए निकलेंगे। मुझे आप बच्चों से उम्मीदें हैं कि आप इस कैंप के लिए बढ़कर हिस्सा लेंगे और सबको इस नेकी काम में सबका साथ देंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर ने वैसे जेब भरने का आइडिया अच्छा निकाला है। आज पैसे लेंगे और कल किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या था फ्लड रिलीफ ये सब। चल यार, बिरयानी खाते हैं। वही की नहीं, शेख की बिरयानी। यूनिवर्सिटी वाले ने फिर से फीस की लाइन लगा दी। क्या चल रहा है? अरे वो तबीयत खराब के काम नहीं। ये बताओ क्या चल रही है? सर ने परसों अनाउंसमेंट की थी ना, डोनेशन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगेगा, ये हुआ है। माल जमा करने की स्कीम मतलब है। हम सब तैयार हो जा रहे हैं, ये सब सामान निर्यात करने। तुम जाओ। चल लूंगा, थोड़ी तफरी हो जाएगी, क्या कहती हो? तुम कर मुझे नहीं पता, ये सर के घर वाले हैं। इस सैलाब में सर का घर भी टूट गया, लेकिन फिर भी सर ने खुद से पहले बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जिनका इस सैलाब में नुकसान हुआ है। हम कितने खुशनसीब है ना, हमें ऐसा साथी मिले जो खुद से पहले हमारे बारे में सोचते हैं। सच कहते हैं उस्ताद वालिदैन की जगह होते हैं। चल यार, बहुत बातें हो गई, अब काम करने से। सर वो आपसे कुछ बात करने की। बताया कि आप
अंदाज़ा नहीं था, और हम पूरे टाइम आप पे इल्ज़ाम तराशी करते रहे, आपका मजाक बनाते रहे। हमें सच में खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज़ सर, अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दिएगा आप हमारा। मिस्टर शर्मिंदा मत हो मम्मी, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम सबको सीधी राह दिखाना, नेकी और बदी में फर्क बताना, यही तो मेरा फर्ज है और मैं अपने इस फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम बच्चों ने मेरा साथ दिया और इस नेकी काम के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी करते रहोगे। चलें कैफे चलते हैं। संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्मा इल्म आगही से दिल मुनव्वर कर दिया, फिक्रो फन तहजीबो हिकमत दी शऊरो आगही, गुमशुदाने राह को गोया के रहबर कर दिया, चश्म फैज और दस्त व पारस सिफ्त जब छू गए, मुझको मट्टी से उठाया और फलक पर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरावान। आप हमारे ये प्रोग्राम SMIU TV और EDU TV पर बराह रास्त और रिकॉर्ड देख सकते हैं। नाजरीन, आज का हमारा मौजू नौजवान तबका के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं और अपनी स्किल्स के ज़रिए कमाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी, हमारा आज का मौजू एंटरप्रेन्योरशिप है कि हम अपना कारोबार कैसे शुरू करें, वो कौन सी फील्ड है जिसमें हम अपने बॉस खुद बनकर अपनी कमाई का ज़रिया तलाश कर सकते हैं। आज इस मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ अमजद बेहलर साहिब मौजूद हैं, जो 5000 स्टार्टअप्स के फाउंडर और CEO हैं। आइए जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और प्रोग्राम में आने का आपका बहुत शुक्रिया। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं सवालात की जानिब। थैंक यू इकरा, आपने इनवाइट किया। थैंक्स टू SMIU कि आपने मुझे मदद किया। थैंक यू सो मच। सर, आप ये बताइएगा एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और कोई कैसे अपना कारोबार शुरू कर सकता है? देखें, एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेसिकली ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपका माइंड सेट है। ये कोई ऐसी डिग्री, ऐसा कोई आर्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मतलब कि पढ़ने से सीखने से आती है। ये बेसिकली आर्ट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि आपको एक मुसलसल एक चीज़ की तरफ डाइवर्जन और काम करने के बाद आपका एक माइंड सेट बनता है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बेसिकली क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये कि आपका माइंड जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला माइंड हो। आप हर प्रॉब्लम में आप सॉल्यूशन क्रिएट करें, तो उसको हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंड। यानी उसमें चाहे वो आप बिज़नेस से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, लेकिन जब भी आपका माइंड जो है प्रॉब्लम सुन के बैकेंड पे उसके सॉल्यूशन के लिए वर्किंग करना शुरू कर देता है, तो हम सोचते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंड है। बेसिकली ये स्टेट ऑफ माइंड है, या माइंड सेट कहना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ कुछ भी नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड और एक माइंड सेट का नाम है। सर, देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कि सबसे पहले जब हम अपने कारोबार शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला जो क्लिक आता है वो ये आता है कि रिस्क, चैलेंज, कि हम ये अपना कारोबार तो शुरू कर रहे हैं पर अगर हमें लॉस हो गया, हम कैसे रिस्क लें इसमें? देखिए, पुरानी जो थ्योरी वो ये थी कि हाई रिटर्न हाई रिस्क, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत की बात ये कि कुछ ना करना सबसे बड़ा रिस्क है। आज के दौर में कुछ ना करना सबसे बड़ा रिस्क है, और रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है लर्निंग करके, उसको सीख के। आज का नया फार्मूला क्या है? जैसे पुराना फार्मूला क्या होता था कि हाई रिटर्न हाई रिस्क, अभी नया करंट हमारा फार्मूला क्या चल रहा है कि
हायर द फाइनेंशियल एजुकेशन लोअर द रिस्क। जितनी आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, जितनी आपकी फाइनेंशियल लर्निंग्स अच्छी होगी, उतना रिस्क आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो हमें रिस्क से भागना नहीं है, रिस्क को अवॉइड नहीं करना, रिस्क को हमने सीखना है कि मैनेज कैसे करना है, हमने उसके साथ गुजारा कैसे करना है, हमने उसको सीखना कैसे, हमने अपने आप को कैसे उसके साथ चलाना है। तो रिस्क को कम करने के लिए हमें रिस्क को सीखना पड़ेगा, रिस्क को समझना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी लर्निंग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन और आजकल यूनिवर्सल फार्मूला यही है कि रिस्क से आप भागे ना, रिस्क को आप अवॉइड नहीं करें, अपनी इंटेलिजेंस बेहतर करें, अपना विजडम बेहतर करें, अपनी नॉलेज बेहतर करें, अपनी लर्निंग बेहतर करें, ताकि आप रिस्क को समझ सकें और उसको रिड्यूस कर पाएँ। फिर भी कुछ लोग हैं वो डर जाते हैं रिस्क लेने के लिए, तो वो अपने इस डर को कैसे भगाएं? देखें, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि कुछ ना करना सबसे बड़ा रिस्क है आज के दौर में। बिल्कुल। और जितना पहले, ये एक मेरा ओपिनियन ये है कि जितना पहले आप रिस्क लेंगे उतना कम सेक्रीफाई आप करेंगे। ये मैं बड़ी आपको एक डीप बात बता रहा हूँ कि देखें, जितना जल्दी आप, जितना अर्ली आप किसी बिजनेस में जंप इन करेंगे, उतना कम आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, उतना कम आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। सो जितना अर्ली आप गेम में आ जाते हैं, उतना अर्ली आप गेम में विनर हो के आप निकल पाते हैं। जितना आप लेट करेंगे, उतना रिस्क जो मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। आप ये बताएं कि आपको कब ख्याल आया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपना काम करना है, और आईटी ही क्यों? देखें, प्रीवियस मेरा बैकग्राउंड जो है वो एज अ बैंकर है, एज अ एवीपी लेवल पे, सीनियर पोजीशन पे मैंने सरेंडर किया था। उससे पहले मैं पैरेलली कुछ बिजनेसेस कर रहा था, कुछ लोगों के साथ मिलके मैं बिजनेसेस कर रहा था। ड्यूरिंग माय बैंकिंग कैरियर मुझे एक चीज़ का आइडिया हो गया था कि जॉब कितनी भी अच्छी हो, वो हेल्दी लाइफ का अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ भी कर लें आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, आप फ्रीडम क्रिएट नहीं कर सकते। तो मुझे समझ में तो आ गया था कि यार मेरे लिए कम से कम जॉब मुनासिब नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा बड़े काम के लिए, मुझे एक चीज़ का आइडिया हो गया था, शायद मैं बड़े काम के लिए बनाया गया हूँ, मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ, मैं इससे बड़ा काम कर सकता हूँ। नो डाउट मैंने अपने 7 इयर्स के बैंकिंग कैरियर में बहुत अच्छा पीक देखा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ में 4 साल मैंने काम किया, वहाँ पे 3 इयर्स में एज अ बेस्ट मैनेजर रहा वहाँ पे, और मैंने 7 इयर्स में अच्छे पीक्स को टच किया। लेकिन फाइनली मुझे ये आइडिया आ गया था, मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं इससे कुछ बेहतर कर सकता हूँ, इससे कुछ बड़ा कर सकता हूँ, इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो आपने कारोबार के लिए आईटी क्यों चुना? आईटी इसलिए चुना कि क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स थे वो आईटी फील्ड से रिलेटेड थे। तो उनको मैं देखता था कि एक कन्वेंशनल जो बिज़नेस है वो 10 साल से बंदा एक बिज़नेस कर रहा है, उसका जो पोर्टफोलियो है, उसका जो टर्नओवर है वो इतना है। एक आईटी वाला बिज़नेस है जिस बंदे को 6 महीने हो गए, उसका टर्नओवर इतना अच्छा है। तो मुझे एक चीज़ तो ये क्लिक कर रही थी। सेकंड ये चीज़ कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि आगे के जो फ्यूचर है, फ्यूचर के जो 10, 20, 30 साल हैं, वो सारे के सारे आपके आईटी के हैं, डिजिटलाइज के हैं। एक चीज़ मैं समझ गया था कि सारी की सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं या होने वाली हैं। आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका मीडिया, आपकी मेडिसिन, आपका ट्रांसपोर्ट, हर इंडस्ट्री आपकी डिजिटलाइज हो चुकी थी या होने वाली थी। तो मुझे ये था कि यही रेस है, अगर हम जितना अर्ली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना अर्ली हम फ्रंट लाइनर्स में काउंट होंगे। जितना हम लेट पार्टिसिपेट करेंगे उतना हम लेट जो आपकी डेडलाइन है उसको क्रॉस करेंगे। तो आईटी का मेन मकसद यही था कि एक तो फ्यूचर ग्रोथ, और फ्यूचर आपका सारा का सारा आईटी में है। अच्छा सर, ये बताएगा आईटी में ऐसी कौन सी फील्ड है जिन जराए से आप जो हैं कि अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं? देखें, हमारी जो करेंसी है रीजन में वीक करेंसी मानी जाती है। आप करेंसी उस इकोनॉमी के साथ आप कनेक्ट हो जाएं जो आपसे 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, 200 दफ़ा स्ट्रॉन्ग है। उससे आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी जो लेबर है वो आप सस्ते में पे करते हो और आपका रिटर्न जो है वो हायर करेंसी में आना शुरू हो जाता है। तो जो भी आपकी आईटी की फील्ड, देखें आईटी इटसेल्फ बहुत, मतलब कि सारी की सारी आपकी डोमेन्स कवर हो जाते हैं। चाहे आप ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, आईटी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी में जो भी आप करते हैं ना,
आपकी करेंसी में कन्वर्जन आपको अच्छा मिलता है, आपको अच्छी उजरत मिलती है और आपका फ्यूचर जो है बनस्बत लोकल करेंसी के अच्छा आपका सिक्योर हो जाता है। ये बहुत एक बड़ा डोमेन है आईटी को, मतलब आप हम एक दो फील्ड में या एक दो डोमेन में कवर नहीं कर सकते। जो भी आपकी ई कॉमर्स आती है, जो भी आपकी सर्विसेज आती हैं, जो भी आपकी इंटेलिजेंस आती है, जो भी आपकी चीज़ें आती हैं, सारी की सारी हमारे आईटी में आती हैं। तो पॉइंट इसके ये नहीं सोचें कि इस फील्ड में जाएंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें जाएंगे तो इसमें कम अच्छा होगा। पॉइंट इज़ कि आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाएं, स्किल्स बढ़ाएं, इंटेलिजेंस बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, देखें वैल्यू जो है ना वो आपकी स्किल्स की, आपकी काबिलियत की है। जहाँ पे भी आपकी स्किल्स, इंटेलिजेंस और काबिलियत होगी वहाँ पे आप अर्न करेंगे। जहाँ पे भी आपकी स्किल्स, आपका वैल्यू एडिशन, आपके स्किल सेट उस अप टू द मार्क नहीं होगा, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी अच्छी मार्केट क्यों ना हो। ये चीज़ हम सबको जितना जल्दी समझ में आना चाहिए उतना जल्दी समझना चाहिए कि देखें जो डिमांड है, जो एक्चुअल क्या कहना चाहिए कि जो आपकी वर्थ है वो आपकी काबिलियत की है। अच्छा सर, ये बताइएगा फ्रीलांसिंग को आप कैसे समझते हैं कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें फ्रीलांसिंग एक वो टूल है जो कि लेटेस्ट मॉडर्न टूल है और हम लोग एज अ पाकिस्तान 4th और 5th नंबर पे एज अ कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड हम लोग काउंट होते हैं एज अ फ्रीलांसर रिसोर्स प्रोवाइडर। फ्रीलांसर के बाद आपको क्या करना चाहिए, जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि उसके आगे एक मिनी एजेंसी बनाएं या एक स्टार्टअप बनाएं। देखिए फ्रीलांसर का मतलब कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने आप को फीड कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली को फीड कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको एजेंसी, आपको स्टार्टअप बनाना पड़ेगा। आपको जब हम जब बात करते हैं कि जॉब्स नहीं है, जब आप भी अपने घर में काम करेंगे, मैं भी अपने घर में इंडिविजुअल काम करूँगा, तो जॉब्स कहाँ से आएंगी? जॉब्स वहीं से आएंगी कि जब आप फ्रीलांसर समझ जाते हैं कि नहीं अब मैं अच्छा फ्रीलांसर हो गया हूँ, अब मैं 4 बंदों की टीम को चला सकता हूँ। तब आप 4 बंदे हायर करते हो और उनकी टीम में आप उनको ऐड करते हो और एक अच्छी इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूशन ऐड करते हो। आप अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताइएगा, 5000 स्टार्टअप्स के बारे में, वो कैसे काम करता है? देखें 5000 स्टार्टअप जो है बेसिकली आप यूँ करना चाहिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसको हम अपने टर्म में वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करती है। स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कैसे करती है? बेसिकली आप यूँ समझें कि आपने देखा होगा कि हर यहाँ पे बंदा जो बिज़नेस शुरू करना चाहता है उसका सबसे मेन जो पहला चैलेंज आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। और जब वो बैंक्स में जाते हैं, क्योंकि मैं बैंकर था तो मुझे पता है, जब वो बैंक्स में जाते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो बैंक्स बोलते हैं अभी तो आपने बिज़नेस शुरू ही नहीं किया, ठीक है, बिज़नेस शुरू कर। बैंक्स हैं इस्टेब्लिश बिज़नेस को तो फर्दर इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लेकिन किसी स्टार्टअप के लिए, किसी स्टार्टअप को या किसी बिगनर को वो सपोर्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा कोई हमारे पास इदारा है। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, वो 3 महीने की आपको ट्रेनिंग्स देते हैं। उनके पास एक सर्टेन 1 साल का एक कोटा होता है कि इतने बेजेस आपने पास करने हैं, ठीक है। वो 3 महीने आपको बेजेस को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ सिखाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में छोड़ देते हैं। वो जो बिगनर होता है वो उसी जगह पे रहता है कि वो बिजनेस शुरू कैसे करेगा। वहाँ पे हमारे 5000 स्टार्टअप का बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक्सपर्टीज़ आपकी, इन्वेस्टमेंट हमारी, मिलके पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। ये सिंपल हमारे बैंक्स में भी, इस्लामिक बैंकिंग में इसको हम मुदारबा का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें एक पार्टनर होता है वो अपनी एक्सपर्टीज़ लगाता है, दूसरा पार्टनर होता है अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है, दोनों मिलके काम करते हैं। ये बैंक के मॉडल में, हमारे इस्लामिक बैंकिंग के मॉडल में भी यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यही 5000 का कॉन्सेप्ट भी यही है, इन्वेस्टमेंट हमारी, एक्सपर्टीज़ आपकी, मिलके काम करते हैं पार्टनरशिप बेसिस पे। कुछ चीज़ें हम देखेंगे बैकएंड पे, कोर एक्सपर्टीज़ आप देखेंगे। तो जो मेन चैलेंज है, जो आपका हिच है, जो कि बिजनेस तो शुरू करें लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, तो 5000 उस चैलेंज को जो है ख़त्म करता है। उसके साथ आपको कोचिंग देता है, उसके साथ आपको मेंटोरिंग देता है, उसके साथ आपको रोड मैप भी देता है, सीखने के मौके भी फराहम करता है। मौके देता है। हमारे साथ सीनियर जो CEOs हैं, मेंटोर्स हैं, उनके साथ आपकी लाइव डिस्कशंस हो रही होती हैं, जो आपसे पहले की स्टार्टअप्स हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अक्सर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर कन्फ्यूजन पाई जाती है, जैसे अपवर्क, फाइवर वगैरह, तो क्या कोई इंसान इन छोटी छोटी ऐप से या कोई अबूर हासिल कर सकता है? देखिए बिल्कुल कर सकता है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, देखें ये इस पे दुनिया काम करती है। मैं सबको ये कहता हूँ कि हमारी जो IT की मार्केट है उसका ग्राउंड बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया इसकी मार्केट है। और ये भी हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली
जो काम आपके पास सस्ती करेंसी में, लेबर जो आपकी यूटिलाइज होनी है। देखें, सिंपल एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं, एक गोरे को जो काम वहाँ $50,000 में यूएस में करके मिलता है, उसको हम $20,000 में सपोज़ जी थैंक यू करके कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा बिजनेस सेंस जो है वो कभी भी 50,000 वाला काम वो 50,000 में नहीं कराएगा। वो तो सोचेगा कि मैं अपनी कॉस्ट कटिंग कहाँ से करूँ, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली आपके पास काम आप ही के पास आना है। आपके जो भी रीजन्स हैं जहाँ पे लेबर सस्ती पाई जाती है, चाहे आपका इंडिया हो, फिलिपीन हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, तो सारा काम आप ही के पास आना है। जहाँ तक बात है जितने हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया इसी से काम करती है और प्लेटफॉर्म की भी रैंकिंग्स होती हैं। प्लेटफॉर्म अपने स्टार्स देते हैं, अपने जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनकी रैंकिंग अप करके उनको स्टार्स दिए जाते हैं और उनकी रैंकिंग के बिहाफ पे ही बेसिकली उनको काम मिलता है कि आपकी रेटिंग अच्छी है तो काम का डाइवर्जन आपके पास अच्छा होगा। ये बेसिकली वही सर्विस मॉडल है कि आप किसी को टाइम पे काम करके देते हैं, कमिटमेंट पूरा करते हैं, प्राइस अच्छी करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, तो जो पोर्टल है आपकी रैंकिंग अच्छी बनाता है और उसके अगेंस्ट फिर काम की डाइवर्जन भी आपकी तरफ ज़्यादा आ जाती है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। Sindh Madressatul Islam University, in collaboration with the Dice Foundation USA, organized a 2-day Creative Arts and Media Summit and exhibition at the Expo Center, Karachi. Number of guest speakers from media, film, drama and academia took part in different panel discussions. A panel discussion was held with the title State of Creative Arts in Pakistan. The President Arts Council, Karachi, Mohammad Ahmad Shah, CEO TV1 Seema Tahir, producer and actor Samina Ahmed, Director Babar Sheikh, actor Paris Masroor and SM Raza discussed the state of creative arts in Pakistan. They said that there was a space for new generation if they want to see their career in the creative arts. The speakers said that the importance of creative arts was being recognized in the country. It is very necessary to have an art education, to be involved in music, to be involved in drama, to be involved in painting and drawing. सिर्फ साइंस पढ़ने से बहुत अच्छी बात है, साइंस में भी इनोवेशंस करनी है, मगर सिर्फ साइंस पढ़ने से एक महज़ब तहज़ीब याफ्ता सोसाइटी नहीं बनती। एक अगर हमने तहज़ीब याफ्ता सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को आर्ट्स में इंट्रोड्यूस करें। वो अपने स्कूलों में, हर स्कूल में ड्रामा पढ़ा जाए, कहानी पढ़ी जाए, लिटरेचर पढ़ा जाए। इसी आर्ट की शक्ल जो हमारे पंजाब में या हमारे सिंध में या हमारे बलूचिस्तान में जो फोक है, वो एक बड़ी आर्ट फॉर्म है जो चंद शहरों तक महदूद नहीं है। आप मेले ठेले पंजाब के जाके देखें, उनके अपने म्यूजिशियंस देखें, इसी तरह से आप बलूचिस्तान में देखें तो फोक म्यूज़िक बहुत बड़ा एक ख़जाना है हमारे पास, सबसे मजबूत तरीन, जिसको हम पूरी दुनिया से प्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोग पाकिस्तान में कई अदारे हैं, हम भी कर रहे हैं कि हम अपना फोक और जो मॉडर्न वेस्टर्न म्यूजिशियंस और हमारे प्योर ईस्टर्न म्यूजिशियन, इनको मिला के भी मुख्तलिफ तरह के फ्यूजन बन रहे हैं। I think we are fortunate to be living in an age which is known as the age of innovation. The age, जैसे हमारे वक्त गुजरा है, पिछला स्टेज हम कहते हैं was the age of science. Today it is of creative innovation. So we are living in a very exciting time. Actually, this is the golden age of creativity. How much can we cash in on that? आपको इस टाइम पे खुद, जब तक आप चाहे स्टूडेंट हों, चाहे आप आर्टिस्ट हों, इस्टेब्लिश्ड हों, नहीं हों, बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक अप इनिशिएटिव्स। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई एक्सक्यूज़ किसी के पास है नहीं, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे की नोट स्पीकर साहब ने भी इस बात की निशानदेही की थी कि एवरीबडी हैज़ टेक्नोलॉजी राइट इन देयर पॉकेट्स। सो आई फील एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर। जैसे एक इंजीनियर बग़ैर इंजीनियरिंग पढ़े इंजीनियर नहीं हो सकता, जैसे एक डॉक्टर बग़ैर मेडिकल पढ़े वो डॉक्टर नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से एक एक्टर भी बग़ैर परफॉर्मिंग आर्ट्स को पढ़े या आर्ट्स को पढ़े वो एक्टर नहीं बन सकता।
ओवरऑल क्योंकि स्टेट ऑफ आर्ट अभी एक डेवलपमेंट स्टेज पे है, ठीक है, प्रोग्रेस चीज़ों में हो रही है। जिस तरह आप देख रही हैं कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स बननी शुरू हुई हैं, लोगों के अभी जो नए कॉन्सेप्ट हैं उस पर काम कर रहे हैं, सही है। तो म्यूरल और फाइन आर्ट जो है वो भी इसी तरह स्ट्रगलिंग स्टेज से है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कर रहे हैं जो कर सकते हैं, जिनकी जितनी अप्रोच है वो अपने तौर पे जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। सवालात जवाबात का सिलसिला जारी करते हैं। जी अमजद साहब, ये बताइएगा कि हम आईटी में आने के लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है या फिर जो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह होते हैं वही हेल्पफुल साबित होते हैं? देखें, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इसमें हम जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिकल और बुकिश के बीच में अच्छा खासा गैप है। न सिर्फ आईटी लेकिन हर फील्ड में जो प्रैक्टिकल हम लोग करवाते हैं और जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं उसके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। सबसे पहले तो वो हमें कवर करना पड़ेगा, चाहे आपकी 4 ईयर एजुकेशन हो, 2 ईयर एजुकेशन हो, चाहे आपका शॉर्ट कोर्सेज हों। इसमें 4 ईयर एजुकेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 ईयर एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है। ऐसे भी हमारे पास बच्चियाँ आते हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज करके काम पे लग जाते हैं और अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो पॉइंट इस कि जितना प्रैक्टिकल होंगे उतना आप क्लोज़र टू अर्निंग होंगे और बेटर अर्निंग की तरफ आप जा चुके होंगे। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि 4-4, 6-6 साल की एजुकेशन पूरी करके आते हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जिनके 6 महीने का कोर्सेस होते हैं लेकिन वो अच्छी जॉब्स पे काम कर रहे होते हैं। पॉइंट इस कि जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, जितना आप स्किलफुल होंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि शायद ये टाइम स्पेशली आईटी में कि एब्सलीट होने वाला है कि आपकी 4 साल की डिग्री, 6 साल की डिग्री उसके बाद आप करके आप फिर मार्केट में उतरते हैं। शायद ये वो टाइम नहीं है। आपको जल्दी वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। 6 महीने में, 1 साल में, 8 महीने में वेल इक्विप्ड होने पड़ेगा। ऐसे कोर्सेज आपको लॉन्च करने पड़ेंगे जो आपको ज़्यादा जल्दी शार्प करें, ज़्यादा जल्दी इक्विप करें और आप फ़ौरन मार्केट में आ जाए। इस टाइम गेम विनर वो है जो जितनी जल्दी मार्केट में आता है। गेम विनर वो नहीं है कि जो कि 6 साल की डिग्री करके 6 साल के बाद मार्केट में आएगा। गेम विनर वो है कि जो जल्दी इक्विप्ड होकर मार्केट में आता है और 6 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके फुली इक्विप्ड हो जाता है। तो बेहतर ये कि आप जल्दी से शॉर्ट कोर्सेज करें, अपने आप को वेल प्रिपेयर करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो स्किल्स हैं वो सीखें और आप आ जाएं। जी आप मुझे ये बताइएगा कि हम मीडिया वाले हैं, तो मतलब मीडिया स्टूडेंट्स जो होते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं इस फील्ड में? देखें, मीडिया वालों के लिए ऑप्शंस अच्छे खासे हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि आप डिजिटल मार्केटिंग से अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। देखें, इस टाइम जो भी बिज़नेस होगा उसको मार्केटिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्रांड बना सकते हैं, आप गूगल एडसन के थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप एक अपना स्टार्टअप बना के चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप डे 1 पे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। पॉइंट ये कि आप जितनी जल्दी मार्केट में इन होंगे उतनी जल्दी आप जो चेक लाइन है उसको आप क्रॉस करेंगे। तो स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्ट विद यूट्यूब, स्टार्ट विद गूगल एडसेंस और आहिस्ता आहिस्ता देखें हर जो भी ब्रांड हो ना, जो भी बिज़नेस हो, उसको मार्केटिंग चाहिए होती है। आप बेहतर रेट्स में, अच्छी क्वालिटी में मार्केटिंग उनके साथ करें। और होता क्या है कि आप अपने क्लाइंट के साथ, जैसे आपका क्लाइंट ग्रो करता है उसके साथ आप भी ग्रो करते हो। आज आपकी क्लाइंट की वॉलेट साइज़ 1 लाख रुपए है, 1 साल के बाद उसका वॉलेट साइज़ जो है 5 लाख का हो जाएगा और आप भी ग्रो कर जाओगे। तो कुछ ऐसे अच्छे क्लाइंट देखें, आपकी कंपनी या मेरी कंपनी या किसी और की कंपनी चलाने के लिए हमें कोई लाखों करोड़ों लोग नहीं चाहिए होते। हमें अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए 10-20 अच्छे क्लाइंट चाहिए होते हैं जिनको रेगुलर हम लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं। रेगुलर वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, रेगुलर हम भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो पॉइंट हमें ये समझना है कि हमें ज़्यादा वॉल्यूम को अट्रैक्ट नहीं करना, हमने ज़्यादा वॉल्यूम को फ़िल्टर करके अच्छे क्लाइंट को हमने प्रायोरिटाइज़ करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और उसको सस्टेन करना है।
तो आप मुझे ये बताएगा हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो किस तरफ जा रही है, कितने बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर रही है? देखें, अच्छा साइन ये है कि हमारा जो डाइवर्जन है वो आईटी की तरफ लोगों को अवेयरनेस आ गई है। ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। जो कि थोड़ा सा ग्रे साइड है वो अगर हम पड़ोस को देखें, फ़िलिपीन को देखें, इंडिया को देखें, बाकी कंट्रीज़ को देखें, तो उनसे हम बहुत पीछे हैं। पीछे नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लेते, देखिए इंडिया की मैं बात इसलिए कर लेता हूँ, हम दोनों की जो हम इंडिया और पाकिस्तान का जो बर्थ ईयर है वो सेम है, हम लोगों की एग्जिस्टेंस सेम है। तो इसी वजह से, और इंडिया की पॉपुलेशन या इंडिया का जो आवाम है और हमारा आवाम तकरीबन एक ही जैसा, एक ही कल्चर पाया जाता है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इस टाइम 200 बिलियन डॉलर को टच कर रही है, और हमारी आईटी इंडस्ट्री का इस जून का जो क्लोजिंग नंबर्स हैं, जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग नंबर्स हैं, वो 2.7 बिलियन डॉलर हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये डिस्टेंस कितना बड़ा है, ये गैप कितना बड़ा है। 200 बिलियन डॉलर प्लस 2.7